What is the treasure in our life? Think. हमारे जीवन में साधना के शब्द गुरुदेव ने बोले, सा मतलब माँ, स्त्रीलिंग, जो माँ को धन के माफी, ऐश्वर्य के माफी, संपद के माफी, प्राण के माफी प्यार करता है, वही साधक है, वही साधना है. What is the real treasure in life? Gurudev's quote. We go to the temple, we ask to Divine Mother. Those who have seen Mother Durga has how many hands? 10 hands. माँ दुर्गा के 10 हाथ है और हम जाकर मांगते हैं माँ दो. We go to the temple, we are sitting in front of the Divine Mother and we are asking, begging. क्या दो? क्या हम मांगते हैं? Gurudev told, whatever you ask, you have only 2 hands to carry, but she has 10 hands to give. And you have so tiny hands, but she has such big hands. She is ready to give you more, but you are not ready to receive, but you are asking very little thing. Then Gurudev told, the best way to pray or to ask, oh my mother, be with me or take me to your lap. जैसा एक शिशु रोता है और चाहता है कि मैं माँ की गोद में बैठ जाऊं, जब शिशु या बालक या कन्या माँ के गोद में बैठ जाता है और अप्राप्ति क्या है? हम तो माँ को पा लिए ना. हम जब माँ को पा लिए, सब तो पा लिए. If we accept or receive, or the mother accepts us, then we own everything. But human mind is very tricky and mind is treacherous. Never trust your mind, because mind is not such a good friend. Mind has been deceiving us lives after lives. Yes, the same mind will be a good friend once the mind is trained and tuned. Otherwise, the mind will pull us in many wrong way and making our way long and long. मन के ऊपर कभी इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन बार बार धोखा देता है. जन्म जन्मांतर में मन ही बंधन का कारण बना. संसार में हमको प्रलुब्ध करके संसार में के अंदर हमेशा खींचता है. वो सही भी है, मन भी मुक्ति का कारण है. अगर जब तक मन सुसंजत नहीं हो, जब तक मन भगवतमुखी नहीं हो, जब तक मन भगवान का ध्यान में आनंद नहीं पाता है, तब तक वो विषय में विषय आनंद ढूंढता है. So long as mind is not able to find joy in prayer, meditation, service, love and devotion, the mind will seek temporary pleasure in this world. गुरुदेव ने बोले, साधना उसी आत्मधन को, मातृ प्रेम रूप धन को पाने के लिए कोशिश करना ही साधना है. What is sadhana? What is spiritual discipline? To perceive the treasure of divine love. And again in Gurudev's own words, that love is manifesting in you through every breath.
Who is breathing? Who is breathing within you day and night? Who is digesting your food? Who is keeping your body active and energetic? If that power of God will not be within you, where is your play? हर श्वास हमेशा बोलता है मेरे तरफ दिखो, हरदम लगा रहो रे भाई, बनत बनत बन जाए तम, मतलब श्वास। हमारे जो श्वास, गुरुदेव has said, your breath is my presence. It is not only his words, it is also the word of the scriptures. योग शास्त्र में बोला है, लिखा हुआ है, संगमम भज सज्जनाथ, संकोच भज दुर्जनाथ, निर्गमे प्रवेशे वायोः गुरुर्लक्ष्यम विलोकयेत्। संकोच भज दुर्जनाथ, refrain yourself from bad company, bad habits, be careful. Sangama bhaja sajjanath, try to avail good company again and again. Nirgame pravese vayoho, with exhalation, nirgama, pravese with inhalation. Gurur laksham bilokayat. Bilokayat means let you look, let you see. Gurur laksham. The Guru is looking within, watch it. With every breath you watch that Guru is within and watching you, looking at you. Lahiri Mahasaya said, if you do not look at the master, how can you know that master is looking at you? In a classroom, suppose a teacher is teaching in the school or college, the student is unmindful looking through the window somewhere. But once the student is little bit conscious and looks at the teacher, finds that the teacher is looking at him. This happens. हमेशा गुरु वर्गों की दृष्टि, भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर है। अगर हम भगवान के तरफ, गुरु जी के तरफ नहीं दिखते हैं, हम बाहर की तरफ दिखते हैं। He is always within, constantly looking at us, but we are looking outside. তুমি হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে, দেখতে তোমায় পাইনি, আমি বাহির পানে চোখ চেয়েছি, ভেতর পানে চাইনি, আমি হৃদয় পানে চাইনি। Song of Tagore. You are within me, but I was looking outside. I never tried to look within, into my heart, into my soul. You are always with me. Nirkame pravese vayoho gurur laksham bilokayet. In every breath you see that the Guru is looking at you. Guru's look. It is not difficult. You are breathing just now. With that breath to feel that love, you are so kind, O God. It is said in the Torah, God breathed into the nostril the breath of life, and man became a living soul. God breathed into the nostrils the breath of life, man became a living soul. Who is breathing through the nostril of yours? God. It is in the Torah. In the New Testament, in the Bible, God is spirit. The worshipper of God should worship him in spirit and truth. Spirit means breath. God is breath. The worshipper of God should worship him in spirit, means in breath. God is breath. Upanishadic mantra, Namo Brahmane,
नमस्ते वायो हो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। ओ ब्रह्मन, आई बाउ टू यू, नमो ब्रह्मणे। हे ब्रह्मन, मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्ते वायो हो, तुम वायु हो, यू आर ब्रेथ। वायु मतलब जो बहता है शरीर के अंदर, आयु वायु श्वासी वायु है। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। प्रत्यक्ष मतलब मैं साक्षात दिखता हूं, तुम साक्षात ब्रह्म हो। प्राण ब्रह्म, प्राणम ब्रह्म इति व्यजानात्। चंचल प्राण से स्थिर प्राण को जाना, श्वास स्पंदित श्वास से निस्पंद प्राण तक जाना, वही तो साधना है। टू परसीव डिविनिटी थ्रू एवरी ब्रेथ, सच ए ब्यूटिफुल opportunity. You don't need so much of flowers, you don't need so much of fruits, you don't need external worship, you just need to dive within. The song which Gurudev sang again and again, the song of Lahidi Baba, Amar Puja Srishti Chhada, आमार पूजा सृष्टि छाड़ा, सेथा नहीं को गंगा जलेर छोड़ा, सेथा फूल लागे ना राशि राशि, आमार हारिए गेछे कोषाकोषी, सरे गेछेन शिव काली तारा, आमी आत्मा निये आत्महरा, आमार पूजा सृष्टि छाड़ा। देवदेवी सब गेछी भूली, एबार आत्मार साथे कोलाकोली, जुक्त मुक्त त्रिवेणीते এবার আমি ডুবে মরি, হারিয়ে যাবার উল্লাসে তাই নিজের পূজা নিজে করি, আমার পূজা সৃষ্টি ছাড়া। फूल की जरूरत है, चंदन की जरूरत है। गुरुदेव बोलते थे, मंदिरे तुमी, पूजा फूले तुमी, आरतीते तुमी, मूर्तिते तुमी, भगवान दिए भगवानेर पूजा, चंदन देव कौन स्थान भगवान। टू परसीव डिविनिटी इन एवरीथिंग। ओ गॉड, यू आर इन द टेम्पल, you are in the deity, you are in the flower, you are in the sandalwood paste, you are in the vesper, in the camphor, in the light, you are in the worshipper, you are in everything. Where shall I put this sandalwood paste? Who? To whom? We need that type of perception. It comes within through practice. Practice, practice, practice. One day you will behold the divine goal. गुरुदेव के वाणी है, अभ्यास करो। अभ्यास करने से भगवत प्राप्ति, मुक्ति सब कुछ संभव है। अभ्यास, अभ्यासेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः।